we will start the chapter rotational motion. In rotational motion, the concept is almost same as the translational motion. In case of the translational motion, for example, this is an object. Here we have the 2 points, A and the B point. If this object is in translational motion, then what happens? The distance covered by the point A will be same as the distance covered by the point B. Not only the 2 points, other 2 points other than A and B, they covers the same distance. So distance is the basic physical quantity in case of the translational motion. If distance is known, other physical quantities like velocity can be calculated, acceleration can be calculated. So this is for the translational motion. Now the same concept we will use for the rotational motion. If this system rotates, then what happens? See, if for example, let us consider the 2 points, point number 1 and point number 2. If we will rotate this system, then what happens? See, this point number 1 or this point will cover less distance and the point 2 covers more distance. Iska matlab, meaning is that the velocity of this point number 1 is less and the velocity of this point number 2, the particle 2 has the more velocity. It means all the particles on this system, they will have different velocity. तो ऐसी कौन सी basic physical quantity है which is same for all the particles during rotation? The basic physical quantity is angle. Let us see. If we will rotate this for one complete rotation, see the point 1 and point 2. See, this point number 1 also covers the angle 360 degree and this 2 also covers the same angle 360 degree. Both the points cover same angle. So in this way, in rotational motion, angle is the basic physical quantity. As in case of the translational motion, distance is the basic physical quantity. In rotational motion, angle is the basic physical quantity. If angle is known, you can calculate angular velocity, omega, theta 2 minus theta 1 upon T2 minus T1. That is final angle minus initial angle to the time taken. This can be calculated, this is angular velocity. If angular velocity is known, then you can calculate angular acceleration, that is omega 2 minus omega 1 upon T2 minus T1. So these are the basic rotational kinematics: angle, angular velocity, angular acceleration. These are the basic rotational kinematics. Now, what is the direction of the angle, angular velocity, angular acceleration? The direction is always along the axis of rotation. If this system rotates, then each point on the systems will cover the same angle. Anti-clockwise, curl your fingers. These fingers are in the anti-clockwise direction. Thumb represents the direction of acceleration, angular velocity. It can be demonstrated in this experiment also. If you will rotate this system, then see, and if you will hold from here, then see. What is the direction? See, the acceleration, angular velocity will be along the axis. Rotational kinematics, simply we observe the motion. If this system rotates, then in rotational kinematics, we will see particles which are rotating like this. What is the angle rotated by the particle? What is the angular velocity? What is the angular acceleration? Like this. But
In case of rotational dynamics, we will study what is the reason of rotation, why the rotation decreases, in which direction we will apply the force to increase the rotation. All these we will study in case of rotational dynamics. So, in rotational dynamics, we will study about torque, angular momentum, moment of inertia. All these we will study in rotational dynamics. Our next topic is torque or turning effect of force. Before starting the torque, let us study about the translational motion. In case of translational motion, for example, if this is an object given to you, if you will apply the force from here, then what happens? This object moves in this direction. Clear? Or instead of applying force from here, if you will apply force from here, then what happens? This object moves in this direction. That is, in case of the translational motion, what happens? Whatever be the direction of the force, object moves in that particular direction. Clear? Now the concept is a little bit different in case of the rotational motion. In case of the rotational motion, we will study what happens to the turning effect if force is applied to the system. We apply force like this. I am applying force. क्या ये object का rotational motion हो रहा है? No. Because if we apply force from here, then the line of action of the force passes through the axis. This is an axis. अगर मैं इसको pull करता हूँ, तब भी जो force होगा वो इस axis से pass होगा. In this case, the object will not rotate. Torque will be, or you can say, turning effect of the force will be zero. First thing is clear. Second thing, when the line of action of the force is parallel to the axis of rotation, for example, this is axis of rotation and I am applying force from here. See, in this direction. क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है? ऑब्जेक्ट में रोटेशन मोशन होगा? नो. टॉर्क विल बी जीरो, टर्निंग इफेक्ट विल बी जीरो. राइट? थर्ड थिंग, टर्निंग इफेक्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस. इंक्रीज इन द डिस्टेंस वेयर फोर्स इज अप्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, सी, इस कंडीशन में फोर्स अप्लाई करता हूं. दिस पॉइंट इज क्लोज टू द सेंटर or close to the axis of rotation like this, then मुझको इस समय ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है. आप करके देख सकते हैं. लेकिन अगर मैं वही फोर्स यहाँ अप्लाई करूँ, then this wheel starts rotating. Means what? जितना दूर आप इस सेंटर से जाएंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, फोर्स अप्लाई करने पर टर्निंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा. राइट? फोर्थ थिंग, टॉर्क इंक्रीजेस when perpendicular force is applied to the line joining the point. The same thing, I am applying force over here along the circumference like this, and this force is perpendicular to the line joining the point. So, in this case, this produces maximum turning effect. This is the two-dimensional figure, and this is an object having center O. Now, this is the point having radius vector r. R is the radius vector at the point P. Now, I am applying force in this direction. This is the force. जो फोर्स हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो at present it is not perpendicular to the line joining the point. Okay, the component of the force or the force which is perpendicular to the line joining the point will produces maximum torque. Okay, now
This is the direction of radius vector, which is radially outward direction. Okay, now this is angle theta. Theta is the angle between the line joining the point and the applied force. This is the angle. Now resolve this force into the two component. This will be the F cos theta and the vertical component will be F sin theta. These are the two components of this force. Now see, this F sin theta is perpendicular to the line joining the point. This produces maximum torque. Now F cos theta is along the, or you can say this F cos theta force, the line of action of this force passes through the axis of rotation. ये axis of rotation, this is pivoted point. So this F cos theta passes through the axis of rotation. इसकी वजह से turning effect होगा? No. This is the first point which we discussed. F cos theta produces no turning effect. Only which component produces turning effect? F sin theta. So if F sin theta is more, it produces maximum turning effect. So we have the two things. Torque or the turning effect will increase if R will increase, okay, distance from the axis of rotation. And second thing, which is the perpendicular component, this produces no torque. Only the component F sin theta produces the torque. Okay, this can be in terms of vector, torque, R vector cross F vector, right? Sin theta is here, cross product will be there. तो जो torque का direction होगा वो R और F vector के perpendicular होगा, R और F vector के perpendicular होगा. This is the R, this is F, R, F. R is along x-axis, F is along y-axis. Perpendicular to both will be z-axis. This will be the direction. Thumb represent the direction of the torque, or you can say, you can write it as like this also, R into F perpendicular. This is the perpendicular component. F sin theta is the perpendicular component. Okay. Now इसको हम F को अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए at the point M. Now if this is theta, this angle is also theta. This line OM will be the perpendicular here. This is hypotenuse R. This will be the R sin theta. OM is R sin theta. This expression can be written as like this also, R sin theta into F. Okay. This R sin theta is perpendicular to the direction of force. Force and the line joining the point, ये दोनों आपस में perpendicular होने चाहिए. या तो force line joining the point पर perpendicular हो, या जो line joining है वो perpendicular हो force पर. See, this is the line joining the point and this is perpendicular to that force. अब हम force को disturb नहीं कर रहे हैं. So this can also be written as R perpendicular into F. This is also the one of the formula of the torque. Right? Remember these 2 points. Clear? Torque is a vector quantity. जैसा अभी हमने आपसे कहा, torque is a vector quantity. The direction is perpendicular to both of them. Newton meter will be the unit of the torque.
टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द टॉर्क, फॉर एग्जाम्पल, see, this wheel is rotating along which plane? Along xy plane. Okay, this is r, this is f, this will be the direction of the torque which lies along the axis of rotation. This is plus x plus y and the plus z. ये जो एक्सिस होगी स्टूडेंट्स माइनस एक्स, क्लियर, दिस विल बी minus y and this will be minus z. Is it clear? Plus x plus y and the plus z. अब हम रोटेशन मोशन की स्टडी करते हैं. दिस इज प्लस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज प्लस जेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दिस wheel rotates like this, if this wheel rotates like this, then what will be the direction of the torque? Along the z-axis. This is the z-axis, x-axis, y-axis. So tau z, torque along the z-axis. Now how can you calculate the torque along the z-axis? It will be the torque along the x-axis plus torque along the y-axis. Okay, this will be the torque along x-axis plus torque along y-axis. The sum of other two torques. Now see, x-axis में देखिए, x-axis में देखिए, मैंने इस व्हील को इस तरह से रोटेट कराया. x-axis में देखिए, दिस इज प्लस एक्स. इस पॉइंट पर फोर्स आप जो लगाएंगे वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे. किस डायरेक्शन? ये कौन सा डायरेक्शन है? एफ वाई, वाई डायरेक्शन है. दिस इज प्लस एक्स एंड दिस इज प्लस एफ वाई, राइट. दिस विल बी द प्लस एक्स एंड प्लस एफ वाई. ओके, plus y-axis, force is applied along the, this is x-axis, this is minus x-axis, fx here minus fx because it is in the negative direction. This is plus y, so here it will be plus y and minus fx. ओके, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. यहां पर देखिए, दिस इज प्लस एक्स प्लस एफ वाई. यहां पर अप्लाई करें वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के अलोंग प्लस वाई. चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होना है स्टूडेंट्स, तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, माइनस एफ एक्स होगा, माइनस एफ एक्स होगा. सो हियर इट इज x f y minus y f x. This is the torque along the z axis. Clear? अगर हम torque along y axis कैलकुलेट करें, this is the y axis, this is x axis, this is z axis. हमको व्हील को कैसे रोटेट कराना है? लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये y एक्सिस के अलोंग होगा, टॉर्क अलोंग द y एक्सिस. अब इसको रोटेट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टॉर्क अलोंग द अदर टू एक्सिस, x एक्सिस प्लस टॉर्क अलोंग द z एक्सिस. क्लियर? कैसे कैलकुलेट करेंगे टॉर्क अलोंग x एक्सिस? देखिए, दिस इज द x एक्सिस. क्लियर? ये x एक्सिस है. हमको यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, सी, जो कि माइनस जेड के डायरेक्शन में है. फोर्स किस डायरेक्शन में है? देखिए, फोर्स किस डायरेक्शन में है? दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज प्लस जेड. फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है?
माइनस जेड डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है प्लस एक्स, दिस विल बी प्लस एक्स माइनस एफ जेड, प्लस जेड एक्सिस में देखिए, सी दिस इज द जेड एक्सिस, ऐसे टर्न करना है, दिस इज प्लस जेड बताया था, इसको इस तरह से टर्न करने के लिए फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, दिस इज प्लस जेड, फोर्स उस साइड लग रहा है, दिस इज द प्लस एक्स डायरेक्शन, सो प्लस एफ एक्स प्लस जेड, प्लस जेड प्लस एफ एक्स, this is along the z direction, so this will be minus x fz plus z fx, this is the torque along the y axis. इसी तरह से आप z direction, y direction, x direction, this is the x direction, यहाँ पर y आएगा और z कंपोनेंट आएगा, दिस इज द y कंपोनेंट, दिस इज द z कंपोनेंट. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द टॉर्क. In order to study the moment of inertia, first of all we will study about the translational motion. Let us consider the two objects. This has less mass and it has more mass. ये हमारे पास दो objects हैं. If we will apply some energy to the two system, then what happens? It has less mass, so this particle will cover more distance, the velocity will be more, and as the mass increases, the velocity, if you will apply the same energy, for example, if E is the energy applied, let the velocity of the first particle is V, then the energy will be the half mv square. If you will apply the same energy to the second system, then what happens? As the mass increases, velocity will decrease. So why this velocity decreases? Because the translational inertia is increasing. As the inertia increases, it resists the motion, velocity will decrease. Now this is for the translational motion. Okay, now the concept is translational inertia. If translational inertia increases, velocity decreases. Now the same concept we will use for the rotational motion. This is the object. अभी मैंने क्या किया है, एक एक्सिस, जो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर. नाउ सी, ये एक्सिस इस समय कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है. ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम एनर्जी अप्लाई करता हूँ जो मैंने ट्रांसलेशनल मोशन में अप्लाई की थी. नाउ सी द मोशन, दिस ऑब्जेक्ट रोटेट्स. क्लियर? अब मैंने मास चेंज नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया, इसकी एक्सिस चेंज कर दी. मास विल रिमेन सेम, अभी मैंने इसकी एक्सिस चेंज कर दी. ठीक है, नाउ सेम एनर्जी यहां भी अप्लाई करिए जो अभी फर्स्ट केस में अप्लाई की थी. ओके, कैसा हो रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो रही है, कम हो रही है. मास देखिए, मास विल रिमेन सेम, मैंने मास को चेंज नहीं किया. क्लियर? लेकिन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोशन में रेसिस्टेंस है वो क्या हो गया, एक्सिस के चेंज होने से जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया. तो जो इनर्शिया है
वो अकेला मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। रोटेशनल इनर्शिया डजंट डिपेंड अपॉन ओनली मास। कुछ ऐसे फैक्टर, मास देखिए, अभी इस केस में मास और इस केस में मास, दोनों में मास तो सेम ही है। मैंने इस ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंज नहीं किया। देखिए यहाँ मोशन देखिए, बिल्कुल सर्कुलर मोशन फ्री है। इस केस में सर्कुलर मोशन में रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या फैक्टर है कि मास के अलावा भी इसका मोशन रेसिस्ट हो रहा है। लेट अस सी द अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सेम एनर्जी यहाँ भी अप्लाई की। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, I applied the same energy. E is equals to half mv square. Right? Now, in case of the rotation, you can write it as half m r omega whole square. This is the linear velocity as the object is rotating, converted into the angular velocity. V is equals to r omega. R is the radius. So, this will be half m r square omega square. Now, compare these two expressions. This is the linear velocity square. This is the angular velocity square during the rotation. This is the translational inertia. This will be the rotational inertia और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी रोटेशन होगा तो हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज आई? दिस आई इज rotational inertia or moment of inertia. So I can be written as mr square. तो आप यहां देख रहे हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेशनल इनर्शिया है, वो सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मास बढ़ेगा, इनर्शिया बढ़ेगा, मोशन डिक्रीज होगा। आर बढ़ने से भी इनर्शिया बढ़ता है। देखिए इस पॉइंट पर मैंने एक्सिस को पास कराया। दिस इज द पॉइंट M. सी, दिस इज द पॉइंट M. हियर R इंक्रीजेस। अगर R बढ़ गया, रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ गया, तो इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन मास, इट डिपेंड्स अपॉन द point from where the axis is passing. If it has more r, more radius, then moment of inertia will be increased. तो ये तो अभी एक पॉइंट के केस में था। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, इट हैज़ वेरियस पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। ऑल द पॉइंट्स आर स्कैटर्ड। सिस्टम के सारे मासेस स्कैटर्ड हैं। दिस A हैज़ R1, इट हैज़ R2, इट हैज़ R3 डिस्टेंस। सो अगर ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है तो पूरे सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? सेम होगा। अभी हमने पहले भी देखा। नाउ दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ लेट अस कंसीडर द point A. Here the radius is R1 from the axis of rotation. Here the point B having radius vector R2, C the R3 and so on. And all the particles are of this system. तो सभी का मास जो होगा वो भी सेम होगा। हाँ, रेडियस ऑफ रोटेशन सबका अलग अलग होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी। जो पॉइंट सबसे दूर पर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। हमने फर्स्ट केस में देखा था। नाउ द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी रिटन एज m r1 स्क्वायर
for the first particle plus mr2 square for the second particle and mrn square for the nth particle. Here mass of all the particles of the system are same, so it is common r1 square plus r2 square and rn square divided by the n and multiplied by the n, total number of particles. Mass of each particle, total number of particles, this will give you the total mass of this system. Here this complete is, let it is k square, where k square is what you have taken, r1 square plus r2 square rn square upon n, or k is equals to under root of r1 square plus r2 square and rn square upon n. So what is k? This k is called radius of gyration, and what it is for the system of particles, सबका रेडियस वेक्टर अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको उसका रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो व्हाट इज के? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. तो किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स अलग अलग डिस्टेंस पर स्कैटर्ड हैं, मास सेम है, अलग अलग डिस्टेंस पर स्कैटर्ड हैं. तो सबसे पहले के निकालिए. के होगा आरएमएस डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, देन m is the total mass. So in this way you can get the net moment of inertia of the system. Now we will study about the angular momentum. It is also a very simple topic. जैसे अभी हमने इसके पहले टॉर्क स्टडी किया. In case of the torque, tau, which is moment of the force, when force is applied, turning effect is there. So torque can be written as r cross f. Okay, this was the torque. Moment of the force is called the torque. Is it clear? In the same way, अगर हमको एंगुलर मोमेंटम स्टडी करना है तो हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम. इन द सेम वे, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है. यहाँ पर हम जिस तरह से टॉर्क बोला, मोमेंट ऑफ फोर्स, ड्यू टू द फोर्स द ऑब्जेक्ट रोटेट्स. हियर रोटेशनल momentum is there, that's why it is called moment of momentum. So in this case L can be written as r vector cross p vector. In the same way, here torque is equal to r cross f. Angular momentum, this can be written as moment of momentum during rotation. So this can also be written as rp sine theta. Is it clear? This is called the angular momentum. Now, moment of momentum, this is the one definition. Another definition, very important definition is that अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है v वेलोसिटी से किसी भी एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, then the momentum about the fixed point, सेंटेंस का ध्यान रखिए, momentum about the fixed point is called the angular momentum. कैसे होगा? Now let us see. For example, this is the mass m
and this mass m is moving with the velocity v, and this velocity is along the x-axis. It is parallel to the x-axis. Okay. Now let us consider the point, fixed point O. Then the momentum of this particle about the fixed point होना बहुत जरूरी है, अलग अलग पॉइंट्स पर नहीं, फिक्स पॉइंट पर जो उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा. कैसे? इस पॉइंट पर रेडियस वेक्टर r, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रेडियस वेक्टर विच इज रेडियली आउटवर्ड. ओके, दिस एंगल इज theta. This angle is theta. This is the r vector. This is the velocity vector. Clear? Now, the momentum of this object with reference to the fixed point here is called the angular momentum. Now, what is p sin theta? This is mass moving with the velocity v, so p is like this. P is also in the direction of the velocity. Now, if you will resolve the two components of this momentum, this is one component and this is another component of the p, right? This component will be the p cos theta and this component will be the p sin theta. Now, what is the vertical component of the momentum? Vertical component momentum का है कितना? p sin theta with reference to the line joining the point. उस लाइन के परपेंडिकुलर मोमेंटम कितना है? p sin theta. So, this is the perpendicular component of the momentum, and this perpendicular component of the momentum is on which line? On the radius vector r. So, this can be like this, जो अभी हमने लिखा हुआ है, r cross p, that is r is this, p is this, the vertical component, the vertical part represent the direction of the angular momentum. ठीक है, जो ये प्लेन है, इस प्लेन के जो ये डायरेक्शन होगा, राइट, जो प्लेन का ये यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं? दिस इज द लाइन जॉइनिंग. मोमेंट ऑफ द फोर्स आर से मेजर करिए एंगल लाइक दिस. अगर ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा एल का. अगर ऐसे मूव कर रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा. आर और पी साइन थीटा आर द two vectors which are perpendicular to each other. R cross P. This is the angular momentum. First thing. Second case, देखिए, this angle is theta, this angle is also theta. Vertical line represent करिए, vertical line drop करिए, point M पर आ गया. This perpendicular will be the, this is r, this is r sin theta, this is r cos theta. So, this formula can also be written as L is equals to r sin theta into p. R sin theta, this, p is this. Now, p and r sin theta are also two perpendicular vectors perpendicular to each other. या तो आप p को रिजॉल्व करिए या r को. तो r का कौन सा पार्ट परपेंडिकुलर है p के? r का r sin theta component of this vector is perpendicular to the p. So, r sin theta into p. This can also be r cross p. This is L. Clear? So, this is the angular momentum. Moment of momentum is called the
angular momentum. Now we study the relation between the torque and the angular momentum. In Newton's second law of motion, the rate of change in momentum is called the force. ये आपने पढ़ा है. F is equals to the dp upon dt, where p is the linear momentum. The same concept in the rotational motion is dl upon dt. What is the rate of change in angular momentum, where L is what? The angular momentum. ये भी किसके बराबर होना चाहिए? टॉर्क के बराबर होना चाहिए. Now we will see here. First of all, d upon dt of L, r cross p, right? Moment of momentum is called the angular momentum. If you will differentiate it, dr, first function, it is the product rule. First function, differentiation of the second, plus second function, differentiation of the first, that is dr upon dt. Okay. Now see here, dp upon dt, change in momentum with respect to the time, it is called force, r cross f, plus p cross v, dr, change in distance with respect to the time, velocity, p cross v, p is mv, so v cross v, both are the same vector, a cross a is 0, so p cross v is also, this term will be 0, therefore this is r cross f, and it is how much? Moment of the force, it is called torque. So in the same way, what is the change in angular momentum with respect to time? It is torque. As same in the translational motion, जो आपने translational motion में पढ़ा है, change in momentum with respect to the time is called force. तो दोनों concept, both the concepts are same. Our next topic is rectangular components of angular momentum. You know well, during rotation, if this wheel rotates, then what will be the direction of the torque? Along the axis. Acceleration, angular acceleration along the axis, angular momentum along the axis. Okay. तो जो उसका rectangular components होंगे, components along x axis, y axis or z axis, how can you represent the angular momentum? For example, if this wheel rotates, then angular momentum lies along this direction. This is z direction, for example, this is z direction, and if this is z direction, this is x direction, this is y direction. So angular momentum along z direction, angular momentum along the z direction, Lz, it is the angular momentum along x axis and angular momentum along y axis. Same as you studied in case of the torque. अब यहाँ देखिए, angular momentum is the moment of momentum. Moment of momentum means L is r cross p. Momentum r cross p. Here in z direction, if this wheel rotates in z direction, this is x. The velocity lies over here. In which direction? Y direction. So momentum is along which direction? जो इसकी linear velocity होगी, अगर आप इसको rotate कराएं, linear velocity will be along the y axis. This is x axis. So this can be written as x into py. Both are positive. Both are positive. See, this is plus x, this is plus py. Right? Now, y axis के along देखिए. This is y plus y, and as the wheel rotates like this, velocity lies along the negative x axis.
This is positive axis, this is negative axis. So it will be the plus y and minus px, right? Minus px in this way. Therefore, it is how much? X py minus y px. This is Lz, number one. This is about the rotation along the zx axis. Now, if suppose this wheel rotates along the y axis, ये देखिए y axis है ये, then other two coordinates are along the x axis and the z axis. Along x axis, if this wheel rotates like this is plus x, this is minus z, this is plus z, this will be the minus z. So माइनस पी जेड, जो वेलोसिटी होगी वो माइनस जेड डायरेक्शन में होगी. देखिए माइनस जेड डायरेक्शन, दिस इज प्लस जेड. देयरफॉर इट विल बी द एल वाई विल बी रिटन एज प्लस एक्स इंटू माइनस पी जेड. ओके, प्लस एक्स minus pz. Okay, this is along z axis, and z axis, see about the z axis, this is plus z, wheel is rotating like this, this is plus z, velocity lies along the plus x axis, so this will be the plus z into plus pz, px, sorry, px. This C, this is z and this is x direction. Velocity lies along this direction. So this will be the z px minus x pz. This is Ly. So in this way you can calculate the components of the angular momentum along x axis, y axis and z axis.